So हम start करते हैं mole के basic concept से. If we start with the basic concept of mole, mole is actually a secret unit of a chemist. Chemists uh, look for the units which they can use as a universal unit. Actually, when we talk about chemistry lab, we have to handle the things in different sorts, in different units, in different situations. I guess we are dealing with on everyday basis almost all four state symbols that we use in our chemical equations. We deal with solids, we deal with liquids, we deal with gases, and most importantly, we deal with a lot of aqueous solutions or solutions as a whole. So mole is actually a unit which is interconvertible to most of the types of quantities we handle in the chemistry lab. सबसे पहले केमिस्ट्री लैब में हम चीज़ों को हैंडल करते हैं on the basis of their mass. So mass is the most common units of handling. Mostly solids are handled in the basis of mass, and the common units is actually gram per mass. ठीक है, solids बहुत ज़्यादा ऐसे हैं लैब में जो हैं जिन्हें हम उनकी mass की basis पर grams में, kilograms में, milligrams में, depending upon how big or how small the quantity we require, उसके हिसाब से handle करते हैं. तो मोल को actually interconvertible होना चाहिए mass के हिसाब से, ठीक है. Not just that, हम फ्लूइड्स को जिसमें हमारे पास गैसेस और लिक्विड्स दोनों आते हैं उनको हम हैंडल कर रहे होते हैं लैब में वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है. तो एक्चुअली मोल को इंटरकन्वर्टेबल होना चाहिए वॉल्यूम के स्टैंडर्ड यूनिट्स व्हिच आर डेसिमीटर क्यूब बाय द वे, उसके हिसाब से भी हमें हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है. सो दैट्स द पॉइंट वी नीड टू बी एबल टू हैंडल इट विद volume. Volume is usually taken for fluids such as liquids and gases. तो हमें उसके लिए भी हैंडल करना आना चाहिए. हम चीजों को जब मोल के लिए डिफाइन करते हैं, we need to define the Avogadro's number, and Avogadro's number is actually the number of particles for anything, any matter on the planet, ठीक है, be it in solid form, liquid form, or gaseous form. Number of particles is a simple number, and we use Avogadro's number for that depiction. Avogadro's number is equal to 6.02 into 10 raised to power 23. So mole is also interconvertible into number of particles. Number of particles have the units of per mole. Actually, number has no units, but as number of particles are taken in one mole of quantity, that's why we consider the units to be per mole. All right. So हम उसे per mole की तरतीब से ले रहे होंगे. Avogadro's number के unit भी per mole के होते हैं. 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles हैं जो एक specific quantity में आते हैं. That is 1 mole of a substance, and the substance can be anything. If we are considering an element, that means the particles are atoms. If we're considering a covalent molecule, that covalent compound, that means the particles are molecules. If we are considering an ionic compound, that means the particles are formula units. And if we're considering ions, the particles would be ions. Generally, we use the word particles to give it a generic meaning. Generic meaning देने का ये फायदा होता है कि आपको पास दफा स्पेसिफिक बात नहीं करनी होती तो आप particles कह देते हैं. लेकिन जब आप element के लिए कह रहे हैं बात, atoms, covalent compounds, molecules, ionic compounds, formula units, और ions के लिए ions का word ही use करते हैं. However, number of particles is actually a bigger term, is a bigger, broader category, if we call it like that. The fourth and last form is that moles should be interconvertible to concentration of a solution. So concentration of a solution is actually taken in 2 units, but the unit that is universally acceptable and is considered as a standard unit is going to be mole per decimeter cube. Although it can also be mass per decimeter cube, but mole per decimeter cube is considered as a standard unit. All right. So वो भी हम वहीं पर study करते हैं. तो mole actually में एक ऐसा यूनिट है जो सारी quantities में convert हो सकता है. अब इन सारों के लिए हमारे पास separate formulas होते हैं. As I'm combining all of them in one place,
सो हम फॉर्मूलाज भी यहीं पर ही डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मैथ्स के लिए बात करता हूँ तो यूजली हम जो फॉर्मूला कोड करते हैं वो होता है मोल्स इज इक्वल टू mass which has to be taken in grams in standard units. If it's not in standard units, you can always go for conversion. और आप जानते हैं कन्वर्जन के बड़े सिंपल इजी रूल्स होते हैं। आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 grams और 1 milligram इज इक्वल टू 10⁻³ grams और 1 microgram इज इक्वल टू 10⁻⁻6 grams या मेट्रिक टन हम यूज करते हैं यूनिट के तौर पे and 1 metric ton is equal to 1000 kilograms, or you can also say it is equal to 100 million 1 million grams. Sorry, 1 million grams means it's actually 10 raised to power 6 grams. लेकिन आप जो कोई भी यूनिट आपके सामने एग्जाम में आए, beat tons, beat kilograms, beat milligrams, you need to convert it back into grams before you put it into this formula, because the formula consists as grams being the standard unit. ठीक है, और हम इसे डिवाइड कर देते हैं सिंपली एमआर से। मोलर मास पे लिख सकते हैं, लेकिन एमआर लिखना चूंकि बच्चे ज्यादा आसानी से एमआर को समझ लेते हैं तो इसलिए मैं मोस्टली इधर एमआर कोट कर देता हूँ। दिस फॉर्मूला इज प्रीटी सिंपल। एमआर इज यूजुअली टेकन फ्रॉम द नेम और द फॉर्मूलाए, कंपेयरिंग इट विद द पीरियोडिक टेबल, और बाकी मोल्स और मास के दरमियान आपकी पूरी कन्वर्जन वर्क करती है। इस तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए हम मोल्स के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं वो होता है मोल्स इज इक्वल टू number of particles over Avogadro's number। ठीक है, Avogadro's number को Na से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्चुअली में इसका यूनिट पर मोल होता है। मोल का यूनिट MOL मोल ही होता है, ठीक है, और इसे हम सिंपली MOL से लिख देते हैं। If we write the E, it's the quantity. If we only write MOL, it means we're writing units in plural। ठीक, तो इसी तरह से मैं सारी क्वांटिटीज के आगे की यूनिट स्पेसिफाई कर रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, सो यूं हमारे पास इसकी स्पेसिफिकेशन हो जाती है। मोल इनवर्स को करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स राइट इट लाइक दिस। ठीक है, so mole inverse goes up and the unit of moles becomes equal to the unit of moles. Gram and gram per mole, gram cancel out, mole per mole is taken above, so the units are equalized on both the right hand side or the left hand side of the equation. Then comes volume. Volume is usually considered in decimeter cube. However, in lab, most of the time you would be working with centimeter cube. Though decimeter cube is the standard unit, however, the work we perform in lab does not require too big amounts. That's why we are mostly working with centimeter cube. 1 decimeter cube is equal to 1000 centimeter cubes. If we talk about the formula of moles here, moles is equal to volume over, which is taken in decimeter cube, by the way, over molar volume. And the value for molar volume is always 24 degrees centigrade at room temperature and pressure for 1 mole of any gas in the world, right? So the units for this one is decimeter cube per mole. And just like we cut out gram and mole was taken above, just like that, we cut decimeter cube and decimeter cube, mole is taken to the numerator of the equation. Hence, the units on both sides equate or correlate to one another because they are equal. That's how we convert moles from volume. This is usually for fluids. Let's talk about concentration of a solution in mole per decimeter cube. So the concentration units are mole per decimeter cube. And as we're discussing for moles, so it would be moles of solute, the unit of which are mole, and it is divided by volume of solution. The unit for which is decimeter cube. That's how the units are mole per decimeter cube.
You actually take the numerator as moles of solute, which has the unit of moles, and the denominator as volume of solution. Volume of solution is usually taken in decimeter cubes, hence the units of concentration mole per decimeter cube. So this way, we can easily tell the students what the units are in different cases, or how you are going to treat the formula. There are 4 formulae in case of moles, and all formulae come from these equations. If you have any questions, please go ahead and ask. No, sir.